डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्ले 1 को डिस्कस किया, जिन स्टूडेंट्स ने या व्यूअर्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाएं आप, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करें और प्ले 1 को देखें और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए गए हैं और उसकी समरी को भी डिस्क्राइब किया गया है। इसी तरह हम प्ले 2 की समरी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम उसके 1 बाय 1 क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है इस प्ले में। तो टॉपिक है हमारे पास विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, एक छोटे सियारे की सैर। क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश। इससे पहले स्टूडेंट्स, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली न्यू नेक्स्ट वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हमारी अपडेट्स को भी देखते रहें। प्ले 2 visit to a small planet notes are being uploaded here for first year students. The play Visit to a Small Planet is written by Gore Vidal. In this play, he criticized the people of the earth. इस प्ले में स्टूडेंट्स, इसकी समरी अगर हम देखें तो इस प्ले में जो ज़मीन के लोग हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया गया है, डिस्करेज किया गया है। आसमान से कोई चीज़ आती है जो ज़मीनी लोगों का जायज़ा लेती है। पहले उसका ये इरादा होता है कि उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, फिर जब मज़ीद लोगों के रवैये को देखते हुए वो ये इरादा करता है कि मैं अब हमेशा यहाँ रहूँगा, कि मैंने वापस नहीं जाना, जिसका नाम क्रेटन होता है। अकॉर्डिंग टू हिम पीपल ऑन दिस अर्थ, जब वो ऑब्जर्वेशन करता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या उसके ओपिनियंस हैं अर्थ के पीपल के बारे में, तो अब हम देखेंगे। पीपल ऑन दिस अर्थ आर inferior to the people of the planets of another solar system. He is of the view that the people of the 20th century is uncivilized. The central character Cretin comes to the earth in his flying saucer. He claims that he and his people are superior to the people of earth. He also claims that the people of the earth are dull and backward. He claims that his people are strong and they can get hold of the whole world. इसमें वो क्या ऑब्ज़र्व करता है कि जो ज़मीन के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बुज़दिल और कम ज़र्फ़ के मालिक हैं, उनकी अखलाकियात भी इतनी अच्छी नहीं हैं। इसके बरक्स दूसरे प्लैनेट के लोगों के बारे में उसका ये व्यू था कि उसके सियारे के जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी अखलाकियात हैं। तो जब क्रेटीन को दूसरी इंसानी मखलूक देखती है तो वो क्या समझती है कि कोई खलाई मखलूक है या किसी दूसरे मुल्क से भेजा गया सस्पिशियस पर्सन है। तो इसमें रॉज स्पेल्डिंग जो जॉन है उसके घर ये लैंड करता है अपना जो रॉकेट होता है उसे। अब क्रेटीन को जनरल पावर्स किडनैप करने के लिए आती हैं, तो क्रेटीन के पास इनविजिबल वॉल क्रिएट करने की सलाहियत होती है, तो वो अपने इर्द गिर्द इनविजिबल वॉल बना देता है और अब वो ये इरादा करता है कि मैं मुस्तकिल यहाँ पे रहूँगा। और उसके ख़यालात ये भी होते हैं कि जो क्रेटीन के प्लैनेट के लोग हैं वो इमोर्टल लाइफ गुजार रहे हैं, जो अर्थ के पीपल हैं वो मोर्टल लाइफ गुजारते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्ले के विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे, दैन एडिशनल देखेंगे। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, लाइन बाय लाइन आपने देखना है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको देखना है और नोट डाउन करना है। क्वेश्चन है, हाउ डज क्रेटीन प्रूव हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स? क्रेटीन प्रूव हिज पावर्स। क्रेटीन हैज़ द पावर टू edit people's mind. So you read people's mind. He raises an invisible wall around his spacecraft. When the army men try to harm it, no one can touch him without permission. He and his people don't die.
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रेटिन्स विजिट? क्रेटिन हैज़ कम टू द अर्थ टू टेक द चार्ज ऑफ द होल वर्ल्ड। क्या मकसद था क्रेटिन का विज़िट करने का? क्रेटिन ये चाहता था कि मैं पूरी दुनिया का जो चार्ज है वो ले लूँ, मैं इसके अपने हाथ में कर लूँ। He also wants to observe and study the earth and the development made by its inhabitants. Next question है how much advanced is the civilization of Cretan than that of the earth? The civilization of the earth is the most advanced one. It cannot be compared with earthly civilization. The civilization on the earth is just in its beginning. The people of the earth are not only at the initial stage of civilization. Next question है can the people of the earth compete with the people of Cretan? क्या क्रेटीन के लोगों से अर्थ के जो लोग थे वो मुकाबला कर सकते थे? No, the people of the earth can't compete with the people of Cretan in any respect. They are inferior to them in knowledge, science, technology, civilization, intelligence, wisdom, and comprehension. Question है how damaging is violence in life? Violence is very dangerous both for individuals and society. It disturbs the peace and stirs chaos in the country. It debars the process of the nation when deserving people are neglected. They create violence and the country suffers in the end. Next question है what type of the life do you foresee in the years 5000? We can foresee that in the year 5000 life will be more developed. Even a layman will be in a position to visit other planets. Science and technology will be in more advanced form. The whole universe will be turned into a real global village. Next question has students how impressive were the morals of Cretan? Cretan's morals are very impressive. He presents himself as superior to the general power and other earthly people. He is very polite and humble from the very beginning of the play. He shows tolerance, patience and kindness towards the other. इसमें क्रेटीन के जो अखलाकियात थे उसके बारे में पूछा गया है कि वो कितने मुतासिर कुन थे, क्योंकि उसके अंदर एथिक्स बहुत ज़्यादा थे, मोरलिटीज़ थी बहुत ज़्यादा, वो बहुत ही खूबियों का मालिक था। उसके अंदर टॉलरेंस, पेशेंट, काइंडनेस जैसी सिफ़ात पाई जाती थी और वो पोलाइट भी था, हम्बल भी था। नेक्स्ट है What is the role of the general powers in the play? Or write a brief note on general powers. ये भी क्वेश्चन बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है, तो इसको आपने लर्न करना है। General powers play a very important role. His duty is to make sure the security of the country. After landing the spaceship, he looks into the matter. He considers Cretan an enemy. He also represents the people of the earth. Question है what is the theme of the Cretan study? The theme of Cretan study is to know about the people and their life on the earth. He compares the life and civilization of the both of planets and tells the drawbacks of earthly life and its civilization. He also wants to develop friendly relations with the people on the earth. Next question is students, how does Cretan impress general powers? Cretan impresses general powers. He exposes general powers' desire of getting a high rank in the US Army. He builds an invisible wall around his spaceships to protect. His research on Earth is excellent. इसके साथ साथ व्यूअर्स अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए। हमारे चैनल पर और भी सब्जेक्ट के गैस पेपर्स अपलोड किए गए हैं,
तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक देख सकते हैं। टू डाउनलोड द कंप्रेहेंसिव notes of the physics for metric, inter and ADP, click on the link physics notes and other subjects. Also links are described in the description. Next अब हम देखेंगे additional questions. Play 2 visit to a small planet. Question है, what did Mr. Spalding say about the flying objects in his TV broadcast? Mr. Spalding concluded his TV bulletins by quoting General Powers that the flying objects were nothing more than a meteor passing through the Earth's orbit. All the suppositions were baseless. Her further quoted him that Americans would be the first to travel in space. Students, meteor हम कहते हैं असहाबे साकिब. Next question है, according to the Spalding, what kind of the people Aline should marry? Or why does Mr. Spalding oppose his daughter's marriage with the John? Or what was the wish of the Mr. Spalding about the marriage of his daughter? इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिस्टर स्पेल्डिंग क्यों चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी जॉन से ना हो, या वो अपनी बेटी की शादी के बारे में क्या ख्यालात रखते थे, और वो क्यों मुखालफत कर रहे थे कि उनकी जो बेटी है एलन वो जॉन के साथ शादी नहीं करे. Spalding believes that Ellen should marry an ambitious and wealthy man who would make his mark in the world. Question है, draw a character sketch of Cretin, or how was the visitor from outer space looking like? Answer है, Cretin, the visitor from the outer space, was in his 40s. He was a pleasant looking man with the side whiskers. He was dressed in a fashion of 1860. क्वेश्चन है, व्हाई डिड जनरल पावर्स कॉल क्रेटिन अ स्पाई? स्पाई मीन होता है जासूस. और व्हाट डज जनरल पावर्स थिंक अबाउट क्रेटिन? जो जनरल पावर्स थी उनके क्या ख्यालात थे क्रेटिन के बारे में? आपने आंसर करना है, जनरल पावर्स कॉल्ड क्रेटिन अ स्पाई टुवर्ड्स सेंट बाय एन एलियन रेस टू स्टडी ह्यूमन बीइंग्स फॉर पॉसिबल इन्वेजन. इन्वेजन का मतलब होता है हमला करना. उनके ये ख्यालात थे कि क्रेटिन किसी दूसरे सियारे से भेजा गया, किसी मुल्क से भेजा गया स्पाई है जो ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी करने आया है, जासूसी करने आया है. तो उनके ये ख्यालात थे क्रेटिन के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन स्पेल्डिंग्स हाउस? आंसर है, आफ्टर imposing martial law at Spalding's house, General Power restricted the house of the phone and the movement of anybody until the crisis was over. इसके साथ साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट. स्टूडेंट्स, अगर आप ये PDF हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हासिल कर सकते हैं. टू गेट अ PDF फाइल ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर नोट्स ऑफ दिस प्ले, विजिट टू अ स्मॉल प्लानट, क्लिक द फॉलोइंग बटन गिवन एट द एंड ऑफ दिस पोस्ट. ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.